हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद एवलिन। और आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 मोस्ट कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड देयर मॉडल आंसर्स की। और इसमें मैंने क्या किया है कि एक सिमिलर सेट ऑफ क्वेश्चंस जिसके कि जो आंसर हैं वो भी बहुत हद तक सिमिलर होते हैं, उनको एक साथ ग्रुप किया है ताकि आपको एक छोटे से आंसर में आपको बहुत सारे आंसर्स को क्वेश्चंस को आंसर करने का क्लू मिल जाए। ठीक है, ये सारे टिपिकल केसेस जो होते हैं क्लासरूम्स में उनके ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्वेश्चन को हम अलग से डील करते हैं कि हाउ विल यू मेंटेन डिसिप्लिन इन योर क्लास। नाउ द आइडियल आंसर फॉर दिस वुड बी दैट instead of just talking about a vague term discipline and always telling them to maintain discipline, you have to let them know what actually discipline is. For this, first of all, we should tell them what are the school guidelines or rules related to discipline. What are the disciplinary actions that will be taken in case of indiscipline? And then you have to tell them for a specific classroom what is it that you want them to do, what is the expected behavior, what is it that, like, every teacher has their own set of rules, so you should let them know that first, because only if you give them clear guidelines will the students know what is it that is expected of them, what is it that is not expected of them. तो इस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन करने में बहुत हेल्प मिलती है। इसके अलावा डिसिप्लिनरी एक्शंस का तो हमने बता दिया है, हमको एग्जेम्पलरी बिहेवियर को रिवॉर्ड भी करना चाहिए, उससे भी डिसिप्लिन मेंटेन करने में बहुत हेल्प मिलती है। कि अगर कोई बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी और द चाइल्ड हैज़ मेड एन एफर्ट टू कीप क्वाइट थ्रू आउट द डे, यू शुड एक्नॉलेज दैट। तो उस तरह के बिहेवियर को एक्नॉलेज करना, उसको ऐसे फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, ये भी बहुत अच्छा होता है डिसिप्लिन मेंटेन करने में। नाउ द सेकेंड थिंग विच इज़ related to your teaching, not directly disciplinary thing, is that you teach in such a way, you create such an atmosphere in the class that students are focused, they concentrate on what you are teaching. So your preparations should be such that discipline does not remain an issue any longer and the students enjoy the class. Okay, if the students enjoy the class, the learning is good, the stress for the teacher is minimum, and the disciplinary issues do not take place. ठीक है, तो ये this is the good I think a good answer for how would you maintain discipline in the class. Now in the cases of these kind of students, कुछ सेपरेट पॉइंट्स हैं, बाकी जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन कॉमन चीज़ें हैं जो सारे सब में हमको अप्लाई करनी है, वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। इन द केस ऑफ अ सीरियस बिहेवियर प्रॉब्लम, लेजी स्टूडेंट, अंडर परफॉर्मिंग स्टूडेंट, डिसोबीडियंट स्टूडेंट, इन ऑल ऑफ दीज केसेस जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर टू इन्फॉर्म द स्कूल अथॉरिटीज़ इफ़ देर आर एनी सीरियस इश्यूज़. The second thing is you do not have to judge the child, you do not have to humiliate the child in any way, you do not have to draw negative attention to the child or make the child a laughing stock in the class. And you have to try to get to the root of the problem. Maybe that the child is facing problem in coping with the subject. He's not able to understand the concepts, maybe the basics are not clear, that is why all of these behaviors are visible. And maybe there are some underlying issues, there are some marital discord between the parents, there are some family issues, there is alcohol abuse or domestic violence at home, because of which the child is expressing his frustration, his lack of confidence, his stress in all these kind of behaviors. तो ये तो हो गया एक कॉमन आंसर जो कॉमनली हमको इन केसेस में बोलना ही है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर सीरियस बिहेवियरल इशू है, इन दैट केस you do not have to start dealing with the problem in your own way, because you do not know when it can become a big problem
and the problem can blow out of proportion, and then you will be held responsible that you did not bring it to the notice of the school authorities. So the school authorities and the school counselor will be dealing with serious behavioral issues. In the meantime, you have to try and establish a bond of trust, a good relationship with the student. Try to get his confidence and then deal with the child accordingly. ये आपको इन केस ऑफ अ सीरियस बिहेवियर प्रॉब्लम में आपको ऐसे करना है ना. बच्चे के साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना मोस्ट केसेस में बहुत इम्पॉर्टेंट है ना. Now, how will you deal with a lazy student? With a lazy student, the problem is what kind of behavior do you expect in a lazy student, जिसको आप lazy student tag करते हो. First of all तो tag ही नहीं करना है हमको, बच्चों को labeling नहीं करनी है. तो अगर आपको लगता है कि ये बच्चा लेज़ी है, ये काम नहीं कर रहा है, या इसका इनकम्प्लीट वर्क रहता है, कैजुअल एटीट्यूड है, केयरलेस है, तो द रीज़न कुड बी that the child hasn't understood the problem. Maybe the child is not getting help from any other students. In this case हम peer counseling की help ले सकते हैं. मतलब peer counseling की इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में हम बच्चों की हेल्प ले सकते हैं. अंडर परफॉर्मिंग के अंदर हम कर सकते हैं, है ना. डिसोबीडियंट चाइल्ड जब हो तब हम कर सकते हैं. सीरियस बिहेवियरल इश्यूज़ के अंदर भी हम peer काउंसलिंग की हेल्प ले सकते हैं. ऐसे सेट ऑफ स्टूडेंट्स हर क्लास में होते ही हैं. कुछ एक बच्चे जो टीचर को बहुत सपोर्ट कर सकते हैं इन डीलिंग विद दीज केसेस. उन जो समझदार सेंसिबल बच्चे होते हैं उनकी हेल्प लेकर के हम बहुत सारे केसेस को सॉल्व करते हैं. जैसे कई बार हम बचपन से ही देखते हैं ना, अगर कोई बच्चा बहुत पढ़ने में वीक होता है तो एक स्मार्ट बच्चे को उसके पास में बिठा दिया है हमने, तो उसको वो हेल्प करता है ना. तो a lot of children they like doing this, है ना. तो इस तरह से ये हेल्प ले सकते हैं हम पीयर काउंसलिंग की. और अंडर परफॉर्मिंग ये लेज़ी स्टूडेंट की बात करें ना, हाँ, इसमें हम बच्चे को एक जैसे जितना बल्क हम दूसरों को बच्चों को दे रहे हैं, सपोज़ एक एक्सरसाइज दूसरे बच्चों को करके लेकर के आनी है, तो आप उस बच्चे को अलग से आप ये बोल सकते हैं, ठीक है, आप क्वेश्चन 1 to 20 मत कीजिए, आप क्वेश्चन 1 to 10 करके लाना. ठीक है. जब बच्चा उतना एफ़र्ट करता है तो उसके एफ़र्ट को एक्नॉलेज करना है, रिवॉर्ड करना है, उसको पब्लिकली अपलॉड करना है उस अचीवमेंट के लिए. और देखिए, सब चीज़ का जो पॉजिटिव अगर आप बच्चे को इनपुट्स दे रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट तो पॉजिटिव होना ही है, आपको उसका बहुत अच्छा असर मिलेगा. तो ये हम अपने आंसर में बोल सकते हैं. ठीक है. फिर अंडर परफॉर्मिंग चाइल्ड के लिए अगेन पीयर काउंसलिंग इज़ हेल्पफुल. हम स्टडी बडीज़ भी बना सकते हैं, है ना. यू कैन यूज़ दिस एज अ मॉडल आंसर. आई हैव ट्राइड दिस इन माई क्लासेस एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक. स्टडी बडीज़ बहुत अच्छा होता है. जैसे कुछ बच्चे होते हैं, दे वॉन्ट टू बी buddies where they can help a child and they do it because they know कि इससे हमको कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलेगा. You can give them write a nice letter, you can put their names on the board, you can give them stars, make them monitors, do something that helps helps them to become more and more supportive. ठीक है. तो इस तरह के जो बच्चे हैं इनको तो फ़ायदा हो ही रहा है. अब जिस बच्चे को वो हेल्प कर रहे हैं, जिसको हमने बोला है कि अंडर परफॉर्मिंग स्टूडेंट है, इसको भी हेल्प मिल रही है. ठीक है. बिकॉज समबडी हैज़ बीन डेजिग्नेटेड टू हेल्प देम. तो उससे क्या होता है कि वो बच्चे को, क्योंकि कितनी बार किसी को बोले ना वो हेल्प करने के लिए, अब कोई है जो साथ में है, हेल्प करने से बहुत असर पड़ता है इस बात का. ठीक है. और बच्चों को ना एक दूसरे से सीखने में बहुत कंफर्टेबली सीख सकते हैं, क्योंकि बिकॉज दे कैन आस्क अ क्वेश्चन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, दे विल नॉट बी एम्बेरेस्ड. सो दिस वुड बी अ गुड स्ट्रैटेजी. Peer counseling, making study buddies is a good strategy for underperforming students. And as I've told you, you have to first check the basics. Maybe it is the concept with which the child is facing an issue. You can also check with other teachers if it is the same in other subjects or in a specific subject. You can find that out also and find a solution accordingly. And counselor की help तो आप ले ही सकते हैं हमेशा.
Now, how will you deal with a disobedient student? A disobedient student is actually a rebel, someone who has gone through a lot. There is a lot that the child is not able to express. He is angry with a lot of things at the same time, and it comes out in the in the form of rebellion and disobedience. For this child, again, counseling is required, and the parents should be taken into confidence. The parents can share their side of the story. How is the child at home, and since when has this kind of behavior become a part of the child's personality? तो ये हमको पूछना है. देखिए, कोई भी हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला है इन बच्चों में से. कभी ना कभी तो चेंज आएगा, तो हमको उसमें बहुत एक्टिव इंटरेस्ट लेना है, हमको इन्वॉल्व होना है. बच्चे के वेलफेयर के लिए अगर हम ट्रूली जेन्युइनली कंसर्न होंगे, तो हम जो भी तरीका यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ द पेरेंट्स एंड द काउंसलर एंड द स्कूल अथॉरिटीज़, it's going to work very well. But the first and foremost thing is that we have to build a relationship of trust with the child. ठीक है. अब इन क्वेश्चंस को आंसर करने में कुछ कीवर्ड्स मैं आपको बता देती हूँ जो आप यूज़ करेंगे. पेशेंस, काइंडनेस, perseverance, not being judgmental, establishing a relationship of trust with the children, trying to understand the child's side of the story, be a good listener. In most of the cases, if you are able to listen to the child and the child is able to find a willing ear, somebody who's willing to listen to the child, that solves a lot of problems. And if the child gets confidence that yes, there is someone with whom I can share all these things, and when the child shares things with you, you have to be you have to respect that child's confidence in you. You do not have to go around telling what the child has told you, and this way you can be the child mentor. You can be you can bring about a turning point in that child's life. So I hope I have answered these questions satisfactorily, and if there's anything, you please let me know. In the meantime, keep on preparing, and all the best for your preparation.